Hi, hi, hello everyone. आवाज आ रही है? Can you all hear me? Okay. Fine. I'll wait for 5 minutes. ठीक है? I'll wait for not 5 minutes, 2-3 minutes more, and we'll start at 8:08 or 8:09. Okay. Till then, I'm just waiting for other people to join. Oh, oh. Hi. I forgot. Actually, I think I should turn this mic this way. Then it would be helpful for me. Yeah, it's better now because I can see whether it's red or green. On the other side, it was quite not possible to see. Yeah, she's good. Like she irritates a lot just because she's 42 or 43 day old. So बस potty सुसु कर देती है इधर उधर. And my mom screw up on me actually. Yeah, it's like audio quality is far much more better than on this particular mic. यार मतलब देखो, जब लिया था तब तो ठीक था, बट अब उसकी कीमत नहीं लगा सकता. So but yeah, it's true कि I bought it from a breeder. But it's a मतलब ऐसा इशू है क्या कि is audio today audio is much more better. टेस्ट का पूछा. हाँ.
Yes, Yuvraj. Yes, I asked them, and so basically he told me ki I'll be actually telling them ki whatever the topics that I've taught you. So like a TXT file that I was creating yesterday, similar to that, something I'll create and send. Whatever the topics that I've taught in the class will be mentioned there. Okay. And what will be happen at the end of the day would be ki they would just judge you ki whether you know this thing or not. So yeah, that will be a mock interview. The mock interview, I'm not aware about that, Priyanshu. I'm not aware about that. And yes, I also talked for the 9 September class. So she said ki there is some issue, on the back end part. So they are working on that, maybe just for that particular class. I guess कल की क्लास आप लोगों को विजिबल होगी. Okay, cool. uh So when I was going to test, it already disconnected 5G, which caused my result. I was not to complete it bad. It's okay, Pia. See, maybe you can just tell them. So the thing is, the tests that are being taken here in edtechs are like not a full and final test. Not there is not the end-to-end test. Okay, so the thing is, if you perform like maybe if there was some issue or something like that. So if you performed not good, so you can just always come up next time and say, ki, hey, like maybe the next day, ki, hey, I just had a bad day, sometimes, and see, everyone have a bad day. Everyone have a bad day. Even sometime Virat Kohli recently, like in the last recent match, he hit century. But sometime he also get bowled on zero, or maybe just get bowled on one or two, और 10-20 रन पे भी आउट हो जाता है. तो it's okay, but that doesn't define yourself, or right, that doesn't define Virat Kohli. That doesn't अरे चलो दूसरे का एग्जांपल क्यों लें. If you were in this class, there was my mom was sick the other day, and I was sick the day before, and after that I was taking classes from 2 continuous day, and one day my mind was just exactly not working. मतलब ऐसे simple से line पे मैं लिख रहा था. I was trying to teach, I was trying to focus here, but my mind was somewhere else. I was constantly thinking, and I was doing very typical typing error. So I just canceled the class. So in the same way, if you feel there's something happened, like this network error or something like that, so you can just always go and come and say, hey, to the batch manager, or to anybody who is the reporting manager or something like that, hey, I was not able to perform, or something has happened, please take a retest of mine. And they're always there, there to help you. टेस्ट में पूछा जाएगा कि मे भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वी फील वो नहीं जाएंगे, अगर सर अगर क्वेश्चन समझ ना आया तो Yuvraj, see, the way you are performing, like the way you are working, I don't think you would fail the interview. Uh, I repeat this thing again and again in the class. Ki try to understand these companies are here to help you. They will earn only when you will learn. This is not a zero sum game. This is a 1+1 game. Zero sum game is ki like to become a neutral, if there is a positive, one has to be negative. Okay, so to win someone has to lose. It's like the zero sum game is a cricket match. I don't know when the test is. The test will be most probably at the end of the module, like maybe in the last week. Okay, in the last week. अरे युवराज देखो भाई, please change this mentality. You all have been working on this mentality since past 14-15 years कि एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे थे. ठीक है, don't do that, at least at this stage of life. These results no matters nowhere. No company is going to ask and come and ask कि how much you have performed in AccioJobs mock. ठीक है, इस मॉक के रिजल्ट से, इस मॉक के सर्टिफिकेट से कुछ भी नहीं होने वाला है तुम्हारे लाइफ में. ठीक है, तो लर्न राइट नाउ टू लर्न, मतलब सीखने के लिए सीखो.
एग्जाम देने के लिए नहीं कि एग्जाम में मॉक में क्या आएगा। अरे यार क्या होगा, 36 साल 30 साल लंबा करियर होता है। इवन इफ यू स्टार्ट 6 months लेट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। डज इट मेक एनी डिफरेंस? The beautiful DSA perform which was it, don't say it was, it is वो कोहिनूर है, वो एकदम that is a gold gem. No, Sidhu, I don't know Telugu. I'm really sorry for that. I really don't know. I've never been to southern part of India. Once I have been to Chennai, but that too when I was 6 or 7 year old for my father's operation in Chennai or somewhere. Like there is some hospital in Vellore, or I guess. Mm. Yeah, my father had a heart surgery that time. So for the surgery we went. Acha, so I can see right now there are around 36 people. So there is अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। I am from basically from Varanasi. Typically my roots are from Varanasi, but I live in Delhi and Kolkata all the time, here and there, here and there. Acha, chalo, let's focus on the class. It's a good time to start the class. I was waiting till then. So some people, I can see some new peoples here. New peoples in the sense, those who didn't attend the yesterday's class. So you might face difficulty for sure. Like yesterday there was only 20 peoples and today we have around 36 peoples. So for people, if you don't know CSS little bit also, so you might feel little difficulty, but again कि जहां नहीं समझ में आए बता देना. I will try to cover up those things in a short similar way. I cannot go in detail for sure, but yeah, if that would be possible to cover up in 1 or 2 minutes, I will try to do that. ठीक है? नहीं यार प्रियांशु, मतलब क्या कह रहे हो, फिर क्लास का वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। क्लास की वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टर्मिनल, ls, cd, डेस्कटॉप, ls फ्रंट एंड, ls d6, mkdir day7. अच्छा, I forgot to push the yesterday's code on GitHub. कल क्लास बहुत लंबी चल गई थी, मतलब दो you people left, there was some people we were discussing some things. So like the class ended around 12. I just forgot to push the class, yeah, around 4 hours. So I'll just forgot to push the codes on GitHub. I'll do that today. ठीक है, D7, yeah, all good. Cap of the yesterday's class in just yeah, it would be really tough. मतलब कल basic CSS properties in short introduction दे दीजिए please. I knew these things would come up. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, to everyone else also, like who attended the class, let's do a short revision, a very short revision. करा देता हूँ सबके लिए, मतलब फिर इनके लिए क्लास पूरा बेकार हो जाएगा। और आपकी भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। आई नो कि थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा रिवीजन। I'll not do this revision in very much detail, but yeah, in a way where you can just understand the things.
ओके, तो सी चलो क्विकली देख लो, ठीक है। स्टाइल शीट आपको पता है कि दिस सीएसएस इज ऑल अबाउट स्टाइलिंग। ओके, सीएसएस इज ऑल अबाउट स्टाइलिंग। यू स्टाइल वेबसाइट इन अ डिफरेंट वे। आप बहुत अलग अलग तरीकों से वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हो, राइट। सो सीएसएस इज यूज टू दैट, ठीक है। A very quick example, like if I just go here and inspect and go in the head section, and there would be some relation style sheet. If I just delete that, there would be some type txt. Yeah, you see this Google page was so beautiful earlier, but now since I removed the styles on all those things, abhi maine bas hata diya. So how ugly this is looking, though the text and everything is still the same, ठीक है। let's stick। अभी देखो, तो what happen is कि you can add a style in 3 ways। there are 3 ways to add a css file। the first one is like maybe you can just add a complete external css file, ठीक है। You can just add write all the css in a complete different file, and you just attach that file in the html file। the way to do that is just you link that file, okay। put a relation attribute, that rel is a relation attribute which tells ki, okay, it is a style sheet, okay। and then you just put, this is the address, this is the url, okay, this is the url of the style sheet, style.css, the file name is, okay। the second way is you can just actually write the css right inside the styling, right inside the html also। you can do that also, no harms in that। is just ki write a style tag like this, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, अभी इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। you can just write a style tag inside this like this way, sorry Steve YL is style. In the style tag, just use a style tag, and then you can write all your css. So I just did this a lot of experiment in the yesterday's class, which I'll not be doing right now, but yeah, if you just put all these html files, css files here, देखो ये सारा मैंने css लिखा है, ठीक है। तो maybe I'll just open this live server। yeah, so this is how the css is, okay। this is how the css is। and in case I would just go here, यार कहाँ गया मैं, डे 5 में क्यों हूँ, मैं डे 6 में होना चाहिए था मुझे। अच्छा, sorry, here it is, here is, this is the file that I made yesterday, ठीक है। so in case I would just go, एक बार ना इसको पूरा हटाओ, ये बड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे। ठीक है, I would just go here and add a CSS file, okay। I would just go and add, and ये रहा। तो ये सारा CSS ना, ये सारा जितना CSS मैंने लिखा है, if I go and select all those and right here in this index file, ठीक है। ये मेरा डे 5 है, डे 4, डे 3, या here it should be, यही होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, डे 6 पे। तो अगर मैं इसको आकर के ना इधर इस स्टाइल के इस एट्रीब्यूट में भी डालूंगा, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूं, अगर सपोज कि स्टाइल शीट मैंने इधर पे कहीं अटैच करा ही होगा। हाँ, ये रहा देखो, इधर पे जो अटैच करा है ना, अभी के लिए इसको हटा देता हूं। तो स्टिल माई ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो अभी भी ना मेरा फाइल सेम है, द फाइल, माय फाइल इज स्टाइल इन द सेम वे, इट विल मेक नो डिफरेंस, ठीक है। द अगेन की द अदर वे टू एंड आई विल जस्ट गो हियर, ठीक है।
इसको कर लेते हैं, and then there is third other type of styling. You can just go here and maybe add like style and background color as ये क्या आ रहा है भाई, बैकग्राउंड कलर एज मे बी ब्लैक डाल सकते हो, BLACK ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको ओवरराइड कर देता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी प्रायोरिटी होती है कि द इनलाइन एलिमेंट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, the whatever the styling you have given has the highest priority, and in here in the style tag and the style sheet. So since this paragraph, now let me just delete this. So did you add CSS file, or is it by creating new file name as style? Okay, Shidu. See, I will do that. I'll show you. See, here, this is my file. This is my file, style.css. This is a new file. What I did was I just added this file, or I just linked this file. I would not say added this file. I just linked this file. So that is the link. Style sheet. This is a style sheet that I'm telling to the HTML, the browser, and this is the like the link of the file or the address of the file. Okay, and here in the style attribute, this is the other way. This is one of the other way to do that. In the style attribute, you can just go and put all this styling there also. ठीक है, इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है. Then okay, basically I made a flow of content also कि what I taught in the yesterday's class. ठीक है, adding CSS file, then there we have a selectors. तो selectors देखो, selectors क्या होता है ना कि suppose that, ठीक है, एक बार आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा. Selector is a really good and important topic, so no harm in repeating this. Yes, I suggest everyone that to watch yesterday. It will be more helpful for ठीक है युवराज, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, होता है, सब यहाँ पे बच्चे ही हो, कोई इश्यू नहीं है। और आपके लिए भी एक रिवीजन हो जा रहा है, क्विक रिवीजन। मैं इसमें अभी कितना हो रहा है, 8:28 हो रहा है ना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। 10 मिनट के अंदर सारा रिवीजन क्विकली थोड़ा जल्दी कर देते हैं, तो ठीक है। मतलब यार देखो, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि करीब 15 बच्चे हैं, तो फिर देयर विल बी 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास राइट नाउ, जिनके लिए ना ये पूरा का पूरा 3 घंटे का क्लास बेकार हो जाएगा। तो इफ वी कैन जस्ट गिव देम 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, अगेन कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दे डिड, so we can be a little compassionate towards them, and from the next time they would also be a little considerate कि if they won't miss the class or the important class at least, ठीक है। तो let's do that। अभी देखो selectors क्या होता है ना, ठीक है, डोंट फाइट, इग्नोर, सॉरी, देखो यार, चैट पे फाइट मत करो, नहीं तो आई विल मेक दैट चैट इन जस्ट लाइक ओनली टू मी। चैट पे फाइट मत करो, फोकस ऑन द क्लास। तो देखो क्या है, सेकंड चीज क्या है कि सिलेक्टर्स के बारे में बहुत ध्यान से देख लो क्या है। So suppose कि there are multiple attributes, there are multiple elements, not attributes, there are multiple elements, just like this div element, this paragraph element and all those things. So you can see, देखो इधर ना इस heading का color different है, there is a different border here, then there is like other different type of background, this have a different block and all these things. So these are different elements. Okay, so I would say let's take a real life example. In a real life example, you have a building. Okay, you have a building, then you have some rooms, kitchen and all those things. So if you want to design your house, or maybe you color your house, what do? You just select elements by their names कि okay, मैं room में, in room I'll paint it with different colors, ठीक है। In room also you have different attributes like left wall, top wall, bottom, the floor, this front wall, like this. So you select different items, so that is what called selectors. So there are multiple type of selectors on that. Now there is key, the first type of selectors are the tag names only. Like you can select the element by using the tags, like you can select the div, you can select the paragraph, you can select the heading. So for example, let's see, I have just these paragraphs, these are IDs, okay, these are IDs. So for now, let's say this is a div, sorry, the h1. So h1 is a tag. Maybe I would give you a div tag also, like div, here it is div. Okay, so you can select the div also, you can select a div also, right?
all the tags that can be used as a selector, the tag names can be used as a selector. Now a tag name there, अब इसके बाद थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाता है कि there, if suppose there are multiple elements with the same tag names, for precise कि there are multiple headings, ठीक है, there are multiple headings or there are multiple paragraphs, there are multiple, how to say this, div element or something like that, and what you want to color them differently. For example, देखो यहाँ पे देखो, ये सारे ना मैंने div और paragraph से बनाए हैं, ये सारे देखो div और paragraph से आपके सामने बनाए हैं मैंने। अब क्या हो रहा है कि मैं इस div को मैं अलग तरीके से कलर करना चाहता था, इस div को अलग तरीके से करना चाहता था। इन दैट केस सो वी ऐड अ एट्रीब्यूट। तो मैंने कल ना क्लास में बहुत अच्छा सा दिखाया था ऑप्शन index.html, मैंने, मेरे को लग रहा है कि मैं दो ये बड़ा प्यारा सा था यार, मैंने इसको खोला था, चलो कोई नहीं, ये भी वही है। तो मैंने ना एक क्लास में कल बस मस्त बहुत अच्छा सा दिखाया था, मेरे को गुड नोट खोलने दो, गुड नोट, हियर इट इज इन द मॉड्यूल 1 नो dev AccuJobs module 5 untitled notebook, yeah। तो देखो in that na, in this I taught yesterday a really great thing, सब बता रहा हूं सब, नहीं कृष्णा just wait, ठीक है, देख लो कहां गया, हाँ ये रहा। तो देखो इसमें ना this part is called the tag, this is called the content, and the entire thing is called the element, okay। So you can just select something from the tag names also, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर ना, इस element के tag के अंदर, किसी tag के अंदर, this the tag, there you write something, ठीक है। तो these are called attributes. Now you can select attribute via attributes also, the selectors can be attribute। अब देखो, suppose you have multiple elements and you want to add you want to specify, give a certain property to certain elements only, ठीक है, maybe certain group of elements, and you want to give it a uniquely something। Just an example that I took in the yesterday's class also, कि maybe in your college every students have their unique ID or maybe registration number, don't consider the class ID, they have the registration number that is unique, then they have a group of people like the group of class IDs and all those things, those they have the same, okay। So that's the thing, ki there are two types of attributes, the selectors attribute that we give, the selectors attribute, that one is the ID attribute, the ID is unique for every people, the ID is unique to every element, you cannot have two common similar, like two same ID in a single HTML page, you cannot have actually, ठीक है। And but the class can be grouped, ठीक है, the class can be grouped together and all those things, ठीक है। ये रहा। इसके बाद मैंने और क्या पढ़ाया था, प्रेसिजन पढ़ाया था, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर एंड पैडिंग वगैरह पढ़ाया था। तो ठीक है, तो बैकग्राउंड देयर इज नथिंग मच मोर टू डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड। चलो इसका भी बता ही देता हूँ कि देखो बैकग्राउंड में क्या स्टाइलिंग होती है इन बैकग्राउंड, ठीक है, फ्लो ऑफ कंटेंट में ही बता देता हूँ इन स्टाइल। अच्छा, बैकग्राउंड, so you can just add a background color using the just background color मैंने कहाँ दिया है, हाँ। तो you can just put a background color, this is as simple as it, लिखा भी हुआ है, simple लिखा हुआ है, you just add background color and you can just give the colors, okay। You can write the color explicitly or you can take the RGB values also like this from here, there are multiple RGB values and all, ठीक है। Then background image, you can set a background image also to some to your profile or to your text element, this here we have added a background image also। So in this background image you use URL, अब URL यूज करके इसके अंदर आप बैकग्राउंड इमेज का लिंक दे देते हो, ठीक है। द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट कि आप सेम बैकग्राउंड इमेज को पूरे कंटेनर में रिपीट करवाना चाहते हो कि नहीं। हियर इट इज नो रिपीट बिकॉज आई वांटेड नॉट टू रिपीट, देन यू कैन आल्सो रिपीट इट इन द एक्स डायरेक्शन, यू कैन आल्सो रिपीट इट इन द वाई डायरेक्शन, आप उसके लिए फिर रिपीट एक्स रिपीट वाई दे सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ही था।
मार्जिन बॉर्डर एंड पैडिंग, मार्जिन बॉर्डर एंड पैडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं यहाँ से ना रिवीजन इज डन टिल दिस पॉइंट, आई वुड स्टार्ट द क्लास राइट फ्रॉम मार्जिन बॉर्डर पैडिंग इज ओनली, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके बाद आउटलाइन पढ़ाना था, तो बॉक्स मॉडल पढ़ाना था, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉक्स मॉडल, the next topic for this will start day 7. We in day 7, let's close the day 6. Let's close day 6. Now we have day 7. In day 7 I have index index dot html, okay. And now I also have style style dot css. Now I also have of flow.txt, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इनको हटा दो अब, इसको तो रहने ही दो। ठीक है, अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, जिस को स्टाइल डॉट html, to all those people जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया था, I hope that a quick revision is sufficient to go ahead with the class. मतलब अगेन की सारी प्रॉपर्टीज एकदम इन डिटेल से समझ में नहीं आएगी, you can just always go around and watch some video or maybe just go at ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, माय अपॉलॉजीज टू अदर पीपल्स, ठीक है। बट ठीक है, सब सारे दोस्त ही हैं, मिल भाई बहन है सारे, मतलब भाई बहन नहीं कहेंगे, चलो भाई बंधु हैं सारे, तो साथ चलना चाहिए, ठीक है। स्टाइल डॉट स्टाइल d2 css d2, let's give this task css d2, open with the live server, yeah. So the flow.txt, let's write what is our task. The first thing that we will read will be box model, ठीक है, ठीक है यार, just give me 1 minute, ठीक है, just give me 1 minute, I just will just take my tea and बस 2-3 स्टेप बचा हुआ है and we'll start after 2 minutes. ठीक है ठीक है ठीक है, yeah, is it audible now, is it audible? ओके ओके ओके, ठीक है। तो इन द लास्ट सेक्शन आल्सो सम पीपल लेफ्ट, तो यार बॉक्स मॉडल एक बार दोबारा से देख लो और अच्छे से देख लेना, ठीक है। दिस इज रियली अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव, आपके मॉक में तो पूछा ही जाएगा, पूछा जाएगा। युवराज, यू वर आस्किंग ना कि भैया कुछ बता दो जो पूछा जाएगा, तो चलो मैं एक क्वेश्चन अभी लीक कर देता हूँ इंटर मॉक का आपका, दैट इज द बॉक्स मॉडल, ऐसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल, ठीक है, बस एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होगा, और मे बी थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड। जी जी जी, नहीं सिर्फ इतना कहने से नहीं होता, पूरा बॉक्स मॉडल आपको समझाना पड़ता होगा कि एक बॉक्स में क्या होता है, मार्जिन, व्हाट मार्जिन इज, व्हाट पैडिंग इज एंड ऑल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Let's see. So let's some write some HTML. Let's write some HTML. Maybe I would write a div. Okay, and inside this div, I have another div. Okay, here I have maybe lorem. ठीक है, and then I can give this div as an ID d1. Okay, I can give this div as an ID d2, ठीक है।
and for a rest of others also, for rest of you, margin padding is clear. हाँ यार, margin padding clear है. उसके बाद ना एक और छोटा सा चीज था, outline. वो बच रखा था कल क्लास में. मतलब when I was discussing the box model, the क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब अटेंडेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी, बच्चों की वो नंबर्स बहुत कम हो गए थे, तो बहुत लोगों की छूट भी गई थी. तो इसलिए मैंने फिर आउटलाइन वगैरह नहीं बताया था कि ठीक है, मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं. तो लेट्स रिवाइज दिस. एंड मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्लास वैसे भी बॉक्स मॉडल ही था कॉन्सेप्ट में, जिसमें मैंने मार्जिन पैडिंग करा दिया था कल. ठीक है, तो सी दिस इज, एंड देन आई वुड ऐड अ स्टाइल सीट. ठीक है, लिंक, दिस इज स्टाइल डॉट css. ठीक है, we can just go here and write our all css. ठीक है, the first is the body selector. So maybe अच्छा ये 8 हो गया. So the body selector, चलो इसके साथ ना मैं ऐसे ऐसे लिख भी देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ. बॉडी सिलेक्टर, SELECTORS, बॉडी सिलेक्टर्स. ठीक है, then here in the body selectors we have the first thing is कि you can just take this and this is the body selector and we can just give a background color. ठीक है, to all those who didn't attend the yesterday's class, ये आपके लिए एक kind of revision हो जाएगा. ठीक है, so can you see now the background color of the body has been changed. So this is how you add a background color. ठीक है, now we can just go and take our div. So there is a ID selector. Since I have given an ID for this, so I can just go and select that element using ID. To select something using its ID, there is a syntax. ठीक है, कुछ सर्टेन रूल्स होता है. ठीक है, मतलब घर में घुसने के लिए रूल है कि आपको गेट से आना पड़ेगा, या फिर मतलब वर्स्ट केस आप खिड़की से आ सकते हो, बट देयर इज अ सर्टेन रूल. ठीक है, आप यू कैन नॉट, कैन वी आल्सो कस्टमाइज बैकग्राउंड. या यू कैन कस्टमाइज ना, मतलब कि आप इस कलर के अराउंड कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी. मेरी मर्जी, मैं ये कलर दे देता हूं, कौन मेरे को रोकने जा रहा है. ठीक है, या इट इज नॉट कि सिर्फ यही देना है, आपकी जो मर्जी आए दे दो. लो यार, कुछ और भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है. इधर आ जाओ, इसमें ये दे दो, जो मर्जी आए वो दे दो. everything. ठीक है, then we have a ID selector. I would maybe write here a comment also. ID SELECTORS, ID selectors. ठीक है, तो आपका सिलेक्टर्स भी इसी बहाने रिवाइज हो जा रहा है साथ साथ. सो you select a ID, you use a ID selector using a hashtag. That is a rule. ठीक है, there is no rocket science in that. So you just go and say D1 because my ID was D1. ठीक है, here I would go, maybe I can give this background color also, background color as aqua. Okay, ये ओवरराइट नहीं किया D1. ठीक है, I would give a border 1 पिक्स, अरे यार क्या हो रहा है, 1 पिक्सल डॉटेड ब्लैक. ठीक है, भाई सर बॉडी सिलेक्टर कैसे टाइप किए. देवेश, द बॉडी सिलेक्टर का ये है देखो, बॉडी सिलेक्टर का ना बस ये कि स्टार यूज करके, सिर्फ स्टार यूज करके. एंड आई रियली अप्रिशिएट सिद्धू एंड ऑल दोस पीपल. ठीक है, अगर इफ यू ऑल आर रिप्लाइंग टू योर फ्रेंड्स लाइक दिस, इफ यू आर मेकिंग दिस चैट प्रोडक्टिव, सो दैट इज रियली गुड. आई रियली अप्रिशिएट. ठीक है, मतलब अगर कोई चैट में पूछ रहा है एंड यू आर क्लियरिंग देयर डाउट्स, तो इससे एक तो कि आपकी भी लर्निंग हो रही है. ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट. ठीक है, सो दिस इज अ बॉर्डर. ठीक है, तो बॉर्डर में देयर आर 2 or 3 स्टाइल्स. द वन इज द यू कैन गिव द लेंथ और द थिंग. सो इफ आई जस्ट गिव इट 10, यू कैन सी द इट इंक्रीज्ड, इजंट इट. देख रहे हो,
and then the dotted is the styling कि ये मेरा dotted style था कि ये dotted type का मेरे को बनाना था, या maybe I could have made it dashed also, DASHED dashed, ठीक है, तो it will become dash, and then the black is my color. So like my black is the color of the my thing. So let's make it 5 pixel only, ठीक है, and then I can select my other div also, the other div, the other ID selector, this is D2, and I can give this also a background BACK background color as maybe blue, not blue, light blue, IGST light blue, ठीक है, नहीं मतलब थोड़ा सा सही रखते हैं, let's come here, and then background light blue, and I would maybe give it a border of 2 pixels, 2 pixels square, SQSOLID solid red, ठीक है, I would give this. So देख लो अभी हो रहा है, अभी ना I would do something कि जो मैंने कल क्लास में ऑलरेडी कर रखा है. The first thing that I would be in the box model, the first thing that we have is border, BORDER border. Then we have margin, MARGIN margin. Then we have padding, ठीक है. Then we have outline, OUTLINE outline, ठीक है. तो all these three we did yesterday. ये outline थोड़ा सा बच रहा है, तो ठीक है, इसको भी कर देते हैं आज. और साथ ही साथ आपका border, margin, padding will all this will be revised. Okay, very good. So first maybe if I'll just अभी ना बहुत ही ध्यान से नोटिस करना, मतलब जो चेंजेस हो रहा है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंजेस होंगे, उसको नोटिस करना. If I'll just go here and add margin, and maybe I would add margin 10%, change हुआ, and I would go here and add margin 10%. अब देखो इसी में डिफरेंस छुपा है, all the difference is hiding. So they see the margin is basically all about, एक बार ध्यान से ना इसको हटाता हूं, अगर इसको मैं हटाता हूं तो देखो ये कोलैप्स हो गया अपने आप में, इसी के साथ जाकर के हो गया. जैसे ही मैं मार्जिन को वापस कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल Z मार्जिन, तो देखो क्या हो रहा है, मार्जिन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो. What margin is doing it is shifting from its parent element. So for this div, the parent element is like this. The parent element is this box, ठीक है, the bigger box, the my entire browser, ठीक है, my entire browser is the parent element. For this div, the parent element is this one. So it is shifting from this. Okay, ये इसको कहते हैं margin, ठीक है. Now we will do some other thing, ठीक है. Though I have taught this thing, दो भैया परसेंट एंड पिक्सल में डिफरेंस क्या होता है यार, परसेंटेज ना, अच्छा बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं. अब है यार ये पहले हटाऊं, हाँ देखो परसेंट में क्या होता है ना कि इट जस्ट गिव द इक्वल परसेंटेज, ठीक है. इसके अंदर जो भी स्पेस बचा रहता है, इसका 10% इस एरिया को ये इक्वली इधर इधर डिवाइड कर देता है. पिक्सल इज एक्चुअली मैट्रिक्स, ठीक है, पिक्सल इज एक्चुअली मैट्रिक्स. यू जस्ट डिवाइड, सपोज लाइक यू हैव 100 सेंटीमीटर ऑफ एरिया, सो यू जस्ट गिव 10%, तो यू जस्ट गिव 10 सेंटीमीटर एवरी टाइम. इसमें ये फर्क होता है, ठीक है. And when you just use a pixel, that pixel is a unit, like centimeter, like millimeter, so it doesn't matter for that will take the entire unit, ठीक है. So for now just अच्छा चलो एक ना एग्जांपल और दिखाता हूं, और एक और एग्जांपल इसको लाइव करके देखते हैं. तो right now since I was using pixel, sorry, percentage, this changed, but in case if I will use pixel now, this wouldn't have changed.
वो भी करके देख लेंगे, अभी साथ में देख लेंगे, ठीक है। देन अच्छा, जस्ट वन क्विक क्वेश्चन, यू ऑल कैन जस्ट आंसर मी ऑनेस्टली, ठीक है, because I would respect everyone's choice and you may consider writing this on my personal chat. Is anyone feeling like bored or like कि ठीक है यार सर एकदम ही पिछली चीजें हम we are going in a repetitive manner or anything like that? Just this I want to do a quick check for that. So maybe in case if you don't want to write on the public chat, you can just write it on to me on the private chat also. I would not bother at all from that. ठीक है, 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 ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, सबका ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं कब कौन नाराज हो जाए। तो ठीक है, the second thing, now the other thing that is one of the this part actually adds beauty, and you know the buttons, the tables, the mostly this thing is used in buttons and table, ठीक है। That is the other thing is padding, हमने margin पढ़ लिया, then we will be looking at the padding part. So let's suppose ना I would add a padding to this particular, अभी सबसे पहले देखना इस यहाँ पे देखना, maybe I'm adding a padding to 10%, 10%। ध्यान से देखो क्या हुआ, मार्जिन इससे पहले ना मैं एक बार जस्ट सी हियर बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से देखो, मार्जिन जब मैं डाला था the content around this is still the same। एक और हम थोड़ा सा HTML में एलिमेंट ऐड करते हैं, this is the main div, okay, this is the main div, I am learning LEAR and I learning the box model, the box MODE model in the CSS, ठीक है। तो अब देखो, I have given a margin to upper div also, I have given a margin to the lower div also, ठीक है। but यहां पे आएगा game changer, if I'm giving a padding to the inside, suppose PADDING padding 10%, I'm giving a padding to the of 10%, when I'm giving a padding, what the hell is happening, this there is this text is shifting downward, ठीक है, leftward right, मतलब ये टेक्स्ट अंदर आ रहा है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है, बट मैंने पैडिंग ऊपर वाले को नहीं दिया, this text is by default at the top left corner, yeah, at the top left corner, ठीक है, inward or something, yeah, inward you can say, the text is shifting, let's give a padding to the upper section also, let's give padding to the upper section also, upper div also, and then I can just okay, I will have to clear all my drawing, yeah. So here I would give, and here I would give a padding of 10%, देखो, when I give a padding of 10% to the upper model, to the upper outer box, is there a noise from my side? Is there any noise from my side? You all are hearing? ठीक है, good, I got it, actually my puppy was is barking, so I was just making sure आवाज यहाँ तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। Coming to the, तो यहाँ पे देखो, जब मैंने इस पे पैडिंग लगाया ना, लाइक टेक्स्ट को शिफ्ट कर रहा है और मार्जिन को बॉक्स को शिफ्ट कर रहा है, टेक्स्ट इज मार्जिन को टेक्स्ट को शिफ्ट कर रहा है और मार्जिन बॉक्स को शिफ्ट कर रहा है। यस अनमोल, यू आर राइट, बट यू आर 70% राइट, ठीक है। एट द सेम टाइम यू हैव टू से टेक्स्ट मार्जिन creates the difference from the upper body, margin creates the difference, the distance, that pixel or whatever is measured from the upper part, ठीक है, इस पार्ट पे डिसाइड होता है, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड,
the padding at the same time, the padding is calculated inward. The padding is calculated inward. ठीक है? Padding is 30, then we will know the difference. Padding is 30, then we will know padding creates space inside. हाँ ठीक है यार, देख लो, मतलब इसके ना अलग अलग मेथड्स देख के अलग अलग चीजें देखकर देख लेते हैं. तो सपोज लेट्स से I would give padding, more padding as padding ना अभी मैं 30% दे देता हूँ. ठीक है, 30% कुछ ज्यादा हो जा रहा है. चलो यार ऐसे देता हूँ, 100 पिक्सल्स दे देता हूँ. पिक्सल और परसेंटेज कम होगा. 100 पिक्सल भी बहुत ज्यादा हो गया. 10 पिक्सल्स. ठीक है, देखो जरा ध्यान देना. 10 पिक्सल दिया, इसको चेंज करते जाते हैं. 20 पिक्सल, 30 पिक्सल. देख रहे हो टेक्स्ट अंदर की तरफ श्रिंक कर रहा है. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट रैपिंग, because of the text wrapping, इसका height and width will change. The height or the width of the box will change because of the text wrapping. For the outside of border, padding is for the inside of border. Yes, very good. ठीक है यार, ठीक है. I hope कि everyone is clear with margin and padding. Everyone is clear with margin and padding. Is there anyone who still have doubt with the margin and padding? ठीक है. वेरी गुड. तो लास्ट एक्सपेरिमेंट इज, एक बार अब ना ब्राउजर में देख लेते हैं. दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट. ठीक है, जस्ट बी हियर विथ मी. इधर आ जाओ. देखो, दिस इज द एक्चुअल कंटेंट. देख रहे हो, दिस इज द एक्चुअल कंटेंट. दिस एंटायर थिंग. अभी मैंने बोल रहा था ना बॉक्स मॉडल. Basically, when you are asked to explain the box model, you have to explain this. You are expected to explain this part. ठीक है, और यही मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं. Even in interviews also, maximum students are failed to do this. अब देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा, एकदम जादू की तरह. मतलब जादू तो नहीं है, क्या जादू मैं बोल रहा हूँ. It's like an animation effect or something like that. Now see this. हाँ जी, देखो ये है तुम्हारा एक्चुअल कंटेंट. ठीक है, द एक्चुअल कंटेंट, यू कैन से द एलिमेंट और व्हाटएवर इट इज. ठीक है, दिस इज द पैडिंग पार्ट. दिस इज द पैडिंग. यू कैन सी द डिफरेंस. पैडिंग हियर. दिस इज द बॉर्डर. मे बी बॉर्डर का ना, मैं बॉर्डर का ये कर देता हूं 10 पिक्सल. ठीक है, दिस इज द बॉर्डर. ठीक है, बॉर्डर. एंड बॉर्डर से ऊपर इज द मार्जिन. गॉट इट. अभी यही एक बार ना, यही सेम काम हम इस वाले के लिए देख लेते हैं. देन इट विल बी ऑल क्लियर फॉर अस. देखो, फॉर द आउटर बॉक्स, दिस इज फॉर द आउटर बॉक्स. फॉर द आउटर बॉक्स, दिस इज द कंटेंट. दिस इज द what it is, content. This part is the padding. This part is the padding. This is the border and this entire thing. देख रहे हो, इसके लिए इसका पेरेंट क्या था? What I told. For that, its parent will be this entire box. अरे यार चल जा भाई. Yeah. This entire browser will be the parent. ठीक है? All clear to everyone? Now I hope कि सब, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. I was recently watching a podcast of Khan sir. You all know Khan sir? So yeah, he just went on the Sandeep Maheshwari show. And he is the Khan sir. Maybe if you don't know, picture देख के याद आ जाएगा. Khan sir. He is Khan sir. Okay, he is Khan sir. I hope you all know. What a confidence. He said कि I will teach in the class and I say कि दम है तो भूल के दिखाओ. So I'm trying to develop that level of confidence. एक दिन hopefully आ जाएगा.
या हम डाउट रहने ही नहीं देंगे. Okay, Sidhu, he is a very popular teacher. He is a very popular teacher in the North India, especially for the government jobs. Government jobs, not especially. He only teaches government job preparations. So it's a very popular dialogue in the North India. So he just said, "Ki I will teach in the class, and if you can, now I challenge you. I'll teach in the class, and now I challenge you. Ki if you have guts, forget it. पैसों के लिए पढ़ाया, रुकना नहीं चाहिए. His best dialogue. Yeah. Yeah, so like that is like one of the supremacy level, OP level. ठीक है. Now then we have something called outline. ठीक है. The next thing that is outline. Today morning. Okay. Yeah, these are the really people. Now see, बारिश. किस किस के घर के या लोकेलिटी या शहर में बारिश हो रहा है, और वो भी बहुत बुरी तरह से, एकदम तूफान उफान जैसा आया हुआ हो. Anyone here is from Kolkata? Anyone here is from Kolkata? But raining here in Assam. ठीक है. और good. Anyway, ठीक है. देखो अब the third thing that we, not the third, the border margin padding. The fourth thing is outline. The outline is basically, outline is nothing, just maybe I would say 20 pixel solid red, purple red. क्रिएट हो जा भाई, क्यों नहीं हुआ? और मैं आउटलाइन की प्रॉपर्टीज भूल गया क्या? UTLIN आउटलाइन CSS outline solid, show that HTML file once. दिखाता हूँ. This box is an outline solid, line dashed, outline inherit, color, inherit triple. ठीक है यार, ऐसा ही तो होना चाहिए था. सॉलिड भी तो देना पड़ेगा. SOLID सॉलिड. या तो देखो, मे बी ना इसके लिए आपको एक चीज दिखाना पड़ेगा. इसको आउटलाइन ना आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, इसको इसके अंदर दिखाते हैं. You will be able to understand outline here. Outline solid purple 20 pixel purple 20 pixel purple. Yeah, so maybe I would increase it to 50%, 50 pixel, or not 50, 80 pixel. तो देखो, can you see, चाहे मैं इसको कुछ भी कर रहा हूं, the box model is not getting affected, so it is not relative. देखो, नहीं man, I am not clear actually. I would say the better sentence, the better way to tell this would be, the outline just simply colors the outer body. ठीक है? It does not have any, it does not care about the others. ठीक है? मतलब it is like कि मेरा घर है, मेरे को छज्जा निकालना है, मतलब I have to take the windows out. ठीक है? अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है रास्ते में कौन है, मैं भिड़ जाऊंगा. ठीक है? It is like that. So see here, it is not creating any difference with the other box model. So if I just put 100, so it will overflow also, and it will hide other. So it is just used to create a beauty. और हर बार this is one of the favorite question of the interviewers कि outline में difference और
they ask whether outline is relative or not. What does the I mean by being relative? ठीक है, देखो being relative का मतलब क्या होता है? सॉरी ठीक है, देखो रिलेटिव होने का क्या मतलब है? अगर इसका ना मैं मार्जिन बढ़ाता हूं, इसका सपोज दैट 10% से मैं 20% मार्जिन बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो ये अपने अदर वाले को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, राइट? इट विल एडजस्ट द अदर पार्टी. सपोज दैट आई विल गो हियर एंड आई विल पुट दिस. सो देख रहे हो, अंदर का टेक्स्ट बाहर वाले के साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है, अंदर का टेक्स्ट बाहर वाले के साथ एडजस्ट हो गया. इट इज लाइक कि घर में नई नई शादी होती है, लड़कियां जब घर में आती हैं तो दूसरे लोगों के साथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं, ठीक है, पर लड़के थोड़े से मतलब ऐसे बदमाश होते हैं, ससुराल में जाते हैं तो कहते हैं नहीं मैं एडजस्ट तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं करूंगा, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा. और द गाय यूजुअली डोंट एडजस्ट विद द गर्ल्स in the house. They ask the girls, so you can consider those guys like to be the outline and the girls like to be the margin and padding who adjust themselves according to the others. But the boys are like कि ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे पैर फैला के सोने का आदत है तो मैं पैर फैला के भी इसके ही सोऊंगा. I will not adjust with like other. और like my puppy, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, उसको मस्त जहां पे पॉटी करना है वहीं पे करेगा वो. तो या सो देखो, जस्ट अ लेम एग्जांपल, जस्ट अ वेरी स्टूपिड लेम एग्जांपल. तो इफ आई जस्ट गिव द पर्पल, देख रहे हो ये पूरा का पूरा पर्पल आउटलाइन कर लिया अपने अकॉर्डिंग. अरे प्रियांशु, बहुत सोच समझ के पालना, बहुत सोच समझ के. इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज एज बिग एज हैविंग अ बेबी. इन केस यू आर इमोशनल, अगर आप इमोशनल हो और you really care about emotions, so it is as equivalent as owning a baby. ठीक है, margin padding हो गया, and then I already had, oh really that's cute Aisha. Then we have, let me have check what do we have other. Box हो गया, outline हो गया, then we have text, fonts, links. Hmm. Okay, ठीक है यार. Let's move to the other topic now. Now we will understand all the everything, each and everything about text. ठीक है, the one of the most crucial, क्या कहते हैं यार, how to crucial, how to say this, crucial, right? One of the most crucial part. ठीक है यार, forgive, pardon my pronunciation. The other thing is text, all about text. ठीक है, so just give me a minute, I'll grab a glass of water. glass सूख रहा है. I'm shouting from the last 1 hour 10 minutes. तो थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ. Just give me 2 minutes.
ठीक है, let's start the text part. Okay, so see, basically इसके लिए ना मैं थोड़ा सा ये अब div2 को जो मैंने इसी के अंदर टेक्स्ट डॉट इसी के अंदर करूं क्या? इसके अंदर मैं हाइट एंड विड्थ इसको फिक्स कर देता हूं, HAIGHT हाइट 100 पिक्सल एंड WEIG width भी 100 पिक्सल्स। इसको हटा देता हूं, आउटलाइन में भी आई वुड गिव 10 पिक्सल एंड इसका मैंने ऐसा क्या किया है कि ये बाहर भाग रहा है, पैडिंग 10 पिक्सल मैंने दे दिया है ना, 10% दे देता हूं। ये अचानक से इट्स लुक लाइक वॉलीबॉल कोर्ट, या इट्स लुक लाइक वॉलीबॉल कोर्ट। व्हाट हैपेंड टू दिस? क्यों कर रहे हो भाई ऐसा मजाक? हाइट इज 100 पिक्सल ऑन 100 पिक्सल। अच्छा, इसका कंटेंट एरिया, दिस टेक्स्ट इज मे बी आई वुड गिव इट 500 पिक्सल, 500 पिक्सल एंड 500 पिक्सल। या WIDTH विड्थ। हाँ, अरे वो कंटेंट एरिया की वजह से कम हो रहा था, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो भी तो अपना स्पेस लेगा ही ना, मैंने कुछ कंटेंट लिखा है तो अब देखो, नाउ वी विल सी ऑल अबाउट टेक्स्ट। ठीक है, वी विल सी ऑल अबाउट टेक्स्ट। द फर्स्ट टेक्स्ट इज कि मे बी इन दिस ना, इन दिस आई विल गो एंड add other text that would be maybe a heading H2 element, that is कि this is the HEADI heading for this text, for this div। ठीक है, this is the heading for this div। और इसको यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, या गॉट इट। सो द फर्स्ट थिंग, you can also select, you can also by default this heading is with because of the padding, and maybe I would remove the padding from here, maybe I would remove the padding, now it is all good। and ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इस div को छोड़ो, अभी के लिए इस div का HTML ही हटा देता हूं, अभी के लिए इस div का HTML ही हटा देता हूं, इसी में लिखता हूं। ठीक है, I would give this as a heading, as control no H2, this is a HEADING, this is a heading। okay, don't think that this is aligned in the center, this is because of the padding part। ठीक है, और इसका मैं padding भी हटा दूंगा। then maybe I would give a paragraph that is lorem। okay, यहाँ पे lorem आ गया। yeah, all good, all good, all good, all good। now we can see। so देखो, अभी ना ये div2 को हटाओ। the first thing कि how to say this, yes, we can select using ID tag selector, maybe I would select H2। अभी मैंने H2 लिया था ना, या it was H2।
So I would take h2, okay, and then I can just simply for the text part the first one is key attribute is color. For the first text the attribute is color. Maybe I would give this a brown color. ठीक है, तो देखो this color attribute change applies to the text. ठीक है, याद रखना the color attribute always applies to the text. Star the color color attribute color property properties applies applies only to the text. ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होता है. ठीक है, in order to change for the background you need to apply like add the different like the entire color for that also, background color and all. ठीक है, then maybe आप इसका टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर हो सकता है. और क्या क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट. ठीक है, अदर थिंग इज कि देखो ये हेडिंग है. ठीक है, यूजुअली हाउ द हेडिंग्स आर, हेडिंग्स जनरली क्या होता है, ऐसे साइड में नहीं होता है. द हेडिंग्स आर नॉट लाइक दिस साइड्स. ठीक है, suppose in case I am taking this away also, this is the because of the padding part. In fact if I just remove the padding part from here, if I just remove the padding attribute from here, see this is not how a heading is all about. or maybe margin को भी मैं अगर हटा दूं तो ये रहा. ठीक है, इस तरह से. तो heading is not like that, right? I hope you all agree. Heading is not like that. Heading is in the center. So the one thing that you can do with the text part is you can just use a property called text align. You can just use a property called text align. And here देखो ये ना आपके अलग अलग तरीके से हैं, मतलब बहुत सारे जगह से हैं ये. You can give some particular locations also. So maybe the best thing is to use at the center. So now you can see the heading is used at a center. अभी एक देखो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल AccioJob का है वेबसाइट. ये क्या किया हुआ है, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, राइट? देख रहे हो, तभी ये बीच में है. ये बेसिकली div के अंदर भी टेक्स्ट अलाइन इस तरह से किया हुआ है. Then there are other text alignment also. For maybe this I said ki you can just align this text to the not only to the right, by default it is to the center. You can just text align to the right also in case you want to write like this. So there are some cases where you write this text. Maybe I would guess some example. Can we align randomly? Karthik, randomly means you want to give some then you have to just give some address to that, like the properties and all. थोड़ा सा जिसके हो ना उसका locations वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से आइडिया होता है, they just can know about it. Okay. Yes. Yes, you can align randomly. ठीक है, so you can just align this right also, and maybe there are other aligning property also. The justify, there is a text. ये justify वाला अभी आपको समझ में नहीं आएगा. When I'll do the text, then you will be able to understand that. So for now, let's keep this in the center. ठीक है, text align center. Then the other thing that align is align justify. Yeah, so for that I would take this paragraph text tag and do the text align, and then maybe I would do the justify. ठीक है, तो देख रहे हो
जस्टिफाई जैसे ही किया तो एक बार ध्यान से देखना ये इसके बीच का डिफरेंस। और मे बी ना मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे रहा हूं, और बड़ा कर दे रहा हूं यार, ये इसको बड़ा करने से बेटर होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई अगर मैं हटाता हूं, इफ आई जस्ट इरेज दिस टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई एंड व्हेन आई एम जस्ट पुटिंग, oh ho, text align justify, just see all the letters will just spread evenly, so that they just put themselves enough space, and or you can say they will spread evenly. The better word to use would be they would spread evenly. ठीक है? Does that make sense? ठीक है। एक और चीज होता है, देयर इज वन मोर थिंग, yes, yeah, there is one more thing, text align, text align last, ठीक है? That you can just maybe, अब देखो क्या होगा, text align last would be center. This basically इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं, yeah. So this text align last is basically all about the last line, ठीक है? The last line. So अभी मैं कई बार लोग the last line को ना इस तरह से लिखना चाहते हैं, जैसे ये देखो एग्जांपल AccJob के वेबसाइट पे, इधर ये वाली लास्ट लाइन, ठीक है, ऐसे बीच में अलाइन की हुई है, सेंटर पे अलाइन की हुई है, ठीक है? The text align line is this, you can just put this as left. If it is left, so the last line will be aligned leftward. You can just put it right, RIGHT, right. The last line will align to the rightward. ठीक है? ठीक है। एक और चीज होता है, there is one more thing, that is direction of the text that will be defined. DIRE, direction. Here you can just give left to right, it will be left to right basis, or you can just give right to left. इसके लिए ना मेरे को ये वाला text align last हटाना पड़ेगा. Can you see? The text is on the right to left basis. ठीक है? If you just give it left to right, LTR, it is on the left to right basis. Standard sizing, it recognize that it's last. यार वो पता होता है, उसको पता होता है, मतलब CSS is smart that it just takes the last line. ठीक है? अब उसके डिटेल्स में मतलब कि इसकी बैकएंड कैसे लिखी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि हाउ दैट एग्जैक्ट बैकएंड इज रिटन, और लाइक हाउ they just specify, मतलब I am using the tool, I have not developed that tool, so I don't know that. And can we align a specific line? यार देखो पैराग्राफ में ना, पैराग्राफ में what happens कि you all the things that change, because अगर when it is a paragraph, Harshal, I'm answering to your question, when there is a paragraph, the paragraph is usually like this, the first line will end, then the second line will go, then the third line will go, and everything that is left is there could be a possibility of leaving left or being left out to the last element, so the last line. ठीक है? ठीक है? It is left to right. It is, see here, it is in the left to right way. If this will go in the right to left order, if I just put in the R2L, can you see it is in the right to left order? It is in the right to left order. So, okay, got it, Ayushi. Very good. Sidhu, very good. L to R means left to right, R to L means right to left. ठीक है?
ठीक है जी। तो देर इज वन मोर थिंग, देर इज वन मोर थिंग। ठीक है, एक और चीज देख लो सर, प्लीज गिव अ ब्रेक फॉर अस फॉर डिनर। सिद्धू, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स 9:30 पे या 9:35 पे देते हैं ना? ठीक है। इज द क्लास इज गेटिंग बोरिंग, आई कैन सी पीपल आर ड्रॉपिंग आउट। 36 से 33 हो गए बच्चे। ओके, हंग्री, हंगर आई कैन अंडरस्टैंड, हंगर आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर हंगर। ठीक है यार, 5 मिनट में ब्रेक देता हूँ, ठीक है, आई गिव ब्रेक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट देख लो इसको। ओके 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 फाइन। तो देखो, एक और चीज है, एक और चीज है कि मे बी यू कैन जस्ट, आई विल हैव टू, फॉर दैट आई विल हैव टू create a p tag inside p tag and random, random, not p tag, I would have to create a span tag, p a n span random, random। ठीक है, तो देखो ये रैंडम है, स्पैन को मैं एक आईडी दे देता हूं, आईडी, आईडी वुड बी की S1, स्पैन 1। ठीक है, here I will just go, there is one more text alignment, there is there is some chat, just let me read। okay okay okay, कोई बात नहीं, don't worry, it will make sense, it will make sense। ठीक है यार, देखो ऐसा हो रहा होगा ना, कल आपने क्लास नहीं अटेंड करी थी, बट सीएसएस में मतलब चीजें थोड़ी सी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आप खुद देखो, एक बार खुद देखो, ऑल द थिंग्स आर सेल्फ जस्टिफाइड। मतलब बैकग्राउंड कलर, अब यार इसमें क्या बताऊं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर, हाइट, कलर तो कलर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कलर क्या कर रहा है, तो ये टेक्स्ट को कलर दे रहा है। टेक्स्ट अलाइन मींस टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन कर रहे हैं, हाउ वी आर अलाइनिंग द टेक्स्ट। डायरेक्शन मतलब कि टेक्स्ट की डायरेक्शन कहां पर हो रही है, ठीक है, इन द टेक्स्ट पार्ट। नाउ ये बॉक्स आइजिंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप, एक्चुअली मैं 2 दिन नहीं था क्लास में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैन वी डू दैट इन द लास्ट ऑफ द क्लास? अबे, कैन वी डू दैट, मतलब 10 मिनट रुक जाना, क्लास के बाद 10 मिनट रुक जाना, उस वक्त आपको समझा दूंगा। हाँ, एक और चीज यार, कार्तिक, यार कली, रिक्की, अच्छा रिक्की, आई फॉरगॉट रिक्की, यू हैव टेकन रिटन योर नेम, सॉरी रिक्की फॉर आपका नाम खराब करने के लिए। ठीक है, देखो रिक्की ने बहुत सही बोला है, वॉट एवर सी हैज सेड और ही हैज सेड। आर यू गर्ल और बॉय? मैं इसमें कंफ्यूज हूं। ओके ही, चलो यार, मैं तुम्हारा जेंडर ही चेंज कर रहा था। ठीक है, रिकी ने अच्छा बात कहा है कि सीएसएस इज मोर अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। बहुत ज्यादा ना, जितना आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, थिंग्स विल मेक सेंस टू यू दैट मच, उससे उतना ही ज्यादा आपको वो सेंस मेक सेंस करेगा। ठीक है, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार। देखो सीएसएस खत्म, इट्स नॉट अ एंडलेस, इट्स एंडलेस है ही नहीं। एमडीएन सीएसएस, आप जाओ यहां पर देखो, सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल से, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए। इतने खतरनाक इतना है, याद करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ फ्रेमवर्क, और नॉट फ्रेमवर्क ऑल्सो, इट इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ लाइब्रेरी बेसिकली। अभी के लिए ना आप फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को एक ही चीज समझो, व्हेन वी विल बी लर्निंग जावास्क्रिप्ट उस वक्त। अच्छा एक चीज यार देखो, जस्ट एक नोटिस दे रहा हूं, अगर ऐसा हुआ कि माइट भी कि मेरे घर में लाइट चली जाए, बिकॉज बहुत ही बुरी तरह से बारिश हो रहा है, तो वाईफाई वाईफाई नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, और क्लास एंड हो जाएगा गलती से, ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा ये ऑल ऑफ द सडन होगा। तो अब आप मेरे पार्ट पे समझ लेना कि ऐसा कुछ हुआ है।
कि देयर इज नो पावर, अगर पावर कट हो जाता है तो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, उस वक्त अचानक ऑल ऑफ द सडन कट जाती है, अगर कुछ ऐसा होता है तो, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से बारिश हो रहा है। ठीक है, जस्ट प्रायर इंफॉर्मेशन, ऐसा ना पता चले कि आप लोग वेट करते रह जाओ कि क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है, चलो डिनर ब्रेक ले लो, डिनर ब्रेक ले लो, अब इसके बाद क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। we'll move ahead with after the 15-minute dinner break. Okay, 15-minute dinner break. uh guys, if to all of you, ऐसे मैंने text पे लिख भी दिया है, I've sent a form on the chat section. Kindly fill it, kindly consider filling it. So there are like 31 students. I'm expecting 31 responses from everyone. It is really very important for improving our prospect, like अब हमारे side से betterment, we are always trying to improve ourselves. So all just give your honest opinion. It is completely anonymous. We have no intention to recording your name, and so we just want honest feedback from your side. Whatever you want to write, whatever you feel you might have not been able to say on the chat section, और बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि टीचर स्टूडेंट वाली दिक्कत होती है, या मतलब दिक्कत नहीं होती, मतलब रिलेशन होता है, कई बार आदमी खुल के नहीं बोलना चाहता है. सो दैट्स फॉर द सेम रीजन द फॉर्म इज बीइंग केप्ट एनोनिमस. योर नेम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, एनी ऑफ योर पर्सनल डेटा इज नॉट रिकॉर्डेड. जस्ट बी ऑनेस्ट एंड जस्ट गिव राइट योर फीडबैक.
Hi, hello everyone. क्या कर रहे हो? Am I the only one जिसका डिनर बना है? नहीं. रिकी, स्पेलिंग इज रॉन्ग फॉर यू इन द फॉर्म. मेरे घर पे 11 बजे से स्टार्ट होता है वरना सेम ईयर. अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है. 3 hours स्ट्रेट अवे क्लास गेट्स लाइक सम टाइम, थोड़ा सा ये ले लेता है सर पे. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द क्लास? प्रेजेंट, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द क्लास? ओनली 7 people. बाकी सारे अभी खाना खा रहे हैं. 10 लोगों ने चैट पे लिखा है मी हेलो 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 हेलो. अटेंडेंस लगाओ यार, अटेंडेंस लगाओ. मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे हैं क्लास में. कि श्रद्धा इज हियर. देवऋषि, अंशु प्रेजेंट. शी. ठीक है यार. I shared a form. I shared a form with you all. Maybe some people who recently joined, like you all went for the dinner. You can just see on the chat section. Maybe I will just share that form once again. Okay, I have just shared the form once again, and for the future, I will make so that it doesn't disappear in the chat section for others. I would highly request you all to kindly consider filling that form. That is really very important because we every time we and my khud bhi, every time I look forward to improve. No one is perfect here, so your honest feedbacks will help us doing better and serving you in a better way. So just kindly consider filling that form. That is completely anonymous. None of your details are being recorded. We have no intention of recording the details, or we don't want to do anything like that. I just want honest, completely honest feedback, so that I can just work on that if there is anything that is required. So kindly consider filling it. Still only 15 responses. Only 15 responses. अरे आपके नाम डिटेल्स कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, तो डोंट वरी. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ खराब लिखोगे या गलत लिखोगे तो आई target you in the class or anything like that. It's just good for our support team. तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाँ.
ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं। forget about all this now. I heard that CSS Battle website will be good for practicing. It will be more 2-3 days raining. यार पता नहीं, मतलब ऐसे रेन इसको नहीं कहूंगा मैं इधर तो जो है इसको तूफान कहूंगा। दिस मोर लाइक ऑफ अ तूफान, ये बरसात नहीं है। When comes, I can ask you a question. Yes, Saurabh. Yes, yes, yes. यार मैंने कम हो गई है, मेरी वॉइस बहुत कम हो गई है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। माई Is the voice now better? Is the voice now better? बहुत ज्यादा फर्क आया है क्या कुछ? Is it like a very big major difference? Okay, 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 okay. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठाक ठीक ठाक। once again, for the last time, I would say to all of you who all have not filled the form, like there are 33 students now, 33 or 36 कितने हैं? 34 हैं, तो 33 students, and I have 24 responses. Kindly consider filling that form. That is really very important. अब आते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। Which form? I'll once again share the link. Here is the link, this form. ठीक है, तो देखो एक और स्टाइलिंग है। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टाइलिंग S1 और आईडी उसे फॉर आईडी है ना, तो S1। सो in case I would say S1, and then the alignment is basically this is the alignment, not this one, top bottom, it's aligned right. Yeah, vertical vertical align top। यार हो जाना चाहिए था टॉप, TEXT टेक्स्ट टॉप। काम नहीं कर रहा है। match.p और I can say SP span, ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? vertical align text bottom, maybe I would say पैराग्राफ में जो आईडी है P and that। अच्छा छोड़ो, leave it. This particular function is not working. I have to actually import an image for that, maybe. ठीक है, I'll have to import a image, maybe like practice। the first thing कि मैं अभी डिनर किया नहीं हूँ एक्चुअली।
but yeah, I'll take that. I'll take that point positively. Thank you so much. Yeah. ठीक है जी, let's move to the other part. Let's move to the other section of this class, and that is basically how should I say? That is text align, text decorations. Text. I would say here text may I have taught ALLING alignment and DECORATION decoration. Okay, the decoration would be something like text DECORATION. So percentage size is this size will be greater than pixel. Not always, Priyanshu. Like pixel area. Pixel is a particular unit. Pixel is a particular unit. Okay. ठीक है. Pixel is a particular unit, like a centimeter, millimeter, or something like that. So let's suppose कि I will take this headline sorry, H1 tag, not H1. I guess this was H2 tag. Okay, yeah, this was H2 tag, and then I can use here a text decoration, and that I can give maybe overline. Okay, so can you see there is a text, there is a overline text. Okay, I can also give it. This is how you decorate or underline. In this there will be underline text. So मतलब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ठीक है? लाइन थ्रू ऑल्सो, या लाइन थ्रू ऑल्सो है. कई बार आप अभी वो सारी प्रॉपर्टीज, मतलब सारी ही प्रॉपर्टीज तो अभी डिस्कस करते ही हैं. वी आर द लीडिंग ब्रांड्स, ठीक है, छोड़ो. देन देयर इज LI लाइन थ्रू. व्हाट इट सिंपली डू कि ये एक लाइन निकाल देता है, ठीक है. At the same time you can also put like this one, text decoration, overline and underline. ठीक है, तो ये एक ऊपर भी लाइन, एक नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देता है. You all can lower your hand. A lot of people have raised their hand. You all can lower your hand, like P Singh, Shatish, Ronak. ठीक है जी. Then there you can also give a style to that. ठीक है, you can give just like a style to that also. Maybe some dotted, write that ki text decoration style. Yeah, text decoration style, and you can just give this dashed. It will change that line to direction R2L means right to left. We can add both values. Yes Priyanshu, हम दोनों ही values add कर सकते हैं, ठीक है. So we can just add this underline, overline. Yes Priyanshu, we can add overline and underline also. And now this is the styling part. There you can just give dotted also. ठीक है, you can just give dotted also.
learns today. Great thing. Yeah, good. Then there are few then you can just also te xt text de यार देखो मतलब आपने एक बार सिर्फ टेक्स्ट ही क्रिएट करोगे तो देखो हाउ मेनी अदर थिंग्स आर देयर यू कैन जस्ट सी हियर टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ठीक है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन कलर CO color and then you can just maybe give a specific color of your choice maybe suppose right now I want to give this velvet blue so this will ये आपको फर्क नहीं दिख रहा होगा maybe कुछ मैं इधर का ऐसा कर दूं तो फर्क दिखेगा या you can see the difference now ठीक है is there anything else that you can do yeah at the same time you can just so there are many but there are endless not endless like there must be some specific count of that for sure but it is more about more and more you experiment around this more and more you make your hand dirty the more you will learn एक क्लास में बिठा करके I cannot actually explain each and every attribute, each and every functions of this. ठीक है, that is actually not physically possible, practically not possible, not physically, practically not possible. ठीक है, but the major things then that I will find कि जो कराना चाहिए वो करा ही देता हूँ. Text decoration and thickness. You can just maybe give 2 pixels. 2 pixel would be too less, 5 pixels. तो देख रहे हो इसकी thickness वगैरह भी okay sir carry on we will practice can we make some distance of the underline नहीं निखिल yeah we can do that अभी थोड़ा सा हम lines के बीच के में कर सकते हैं we can create the space around that between the lines अभी इसके बाद वो ही करेंगे words के बीच में spacing lines के बीच में spacing and all those things we will do that for the interview we have to know all this देखो आयुषी I have a very clear say on that I have a very clear say on that how to say this it should not be this is my personal opinion ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूंगा आई वुड जस्ट सिंपली से कि भाई ये लो गूगल इधर रहा ये गूगल ये तुम्हारा है इससे सर्च करो और कर लो अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है बट मे बी जो इंटरव्यू ले रहा है उसका माइंडसेट क्या है मेरे को नहीं पता बट देखो अब उसमें क्या है फॉर एग्जाम्पल क्या है सपोज कि यू नो कि टेक्स्ट डेकोरेशन में है एंड यू मे बी वांट टू ट्राई सम अदर वे ठीक है कि टेक्स्ट डेकोरेशन में कौन कौन से अदर वेज होते हैं यू फॉरगॉट कि देयर आर डॉटेड देयर आर सॉलिड एंड ऑल दोस थिंग्स ठीक है hear me out for everything अरे सुन लो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं और तुम्हारी ही बात को एड्रेस कर रहा हूं कि क्या गूगल करना चाहिए और क्या गूगल अलाउड नहीं होता है तो फॉर एग्जांपल मे बी कि जैसे ये टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल है ना तो इसके स्टाइल्स की ये सारे हैं और मे बी कि मेरे को सारे याद ना हो ये पॉसिबल है ठीक है बट टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल याद रहना चाहिए ना मतलब कि दैट उस बी समथिंग और यार अभी तो जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ठीक है इसके बाद पोर्टफोलियो वगैरह बनाएंगे सब कुछ बनाएंगे उन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा मेजर कुछ यूज ही नहीं हो रहा बहुत ज्यादा मेजर यूज नहीं हो रहा अगर आप प्रोजेक्ट खुद से बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा ठीक है मतलब आप याद इस तरह से होगा कि इट्स लाइक आपने कभी ऐसा फील किया है कि अगर आप एक रास्ते से कभी भी चले जाओ आप 5 साल बाद भी उस रास्ते से अगर जाते हो ना तो यू जस्ट काइंड ऑफ रिमेंबर द थिंग्स कि देयर अच्छा ठीक है रिलेट कर पाते हो ठीक है यू जस्ट काइंड ऑफ रिलेट देयर यार आई एम रियली सॉरी यार एक लड़का है यहाँ पे स्विगी का क्लोन बनाया था what's your name can you just tell me who was that guy who made the Swiggy clone of Swiggy yes Saurav, do you think you maybe you can reply on the everyone chat now
Do you think you will now remember, have to go and learn or just mug it up these values, like कि border क्या होता है, padding क्या होता है, margin क्या होता है, text decoration क्या होता है, text alignment क्या होता है? Do you think you need to remember since you have made the project? Gaurav, can you just reply those things in the public? Like maybe you can choose to everyone and then reply. All those chats are directly to me. Not okay, ठीक है, mic permission I would give. Wait. एक मिनट गौरव, मैं तुम्हें दे रहा हूँ. Participant. Yeah, Gaurav, you can unmute yourself. Can you? Yeah, am I audible? Yes. एक बात बताओ गौरव, कि now since you have made a project, आपने मुझे 2 प्रोजेक्ट्स दिखाया, एक स्विगी वाला दिखाया था और एक उससे पहले कुछ दिखाया था, उसमें भी आपने कराया था. नाउ डू यू थिंक कि अब आपको जाकर के हर बार ऐसे याद करना पड़ेगा हर चीजें? Again, you're not audible, Gaurav. You're not audible. सर मतलब याद रह जाता है सर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद. What do you think? What is the key thing to get familiar with all these things, all these properties? Practice and practice in the sense make projects. Yeah, make projects again and again. Project. Maybe you all can see. Gaurav ने मुझे कल लास्ट में दिखाया था, ठीक है? Gaurav, you can just share your screen and just I'll give you the permission. Yeah, you have the permission. Just share your screen. Okay, sir. I have made Facebook and Instagram today, so can I share that one? Yeah, sure. Yeah, just a second. And Gaurav, when did you started learning this web development? First day, sir. Of our पहले आपने HTML CSS नहीं पढ़ा था? नहीं सर, नहीं पढ़ा था. सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ. ये सर फेसबुक का पेज बनाया. ओके. और इट इज विजिबल ना सर? हाँ, विजिबल है. या और ये इंस्टाग्राम पेज. वेरी गुड. आप ना वो भी दिखाओ. स्विगी वाला पेज आपने बनाया था. जस्ट अ सेकेंड सर. आपने इसमें बूटस्ट्रैप यूज किया है या फिर प्योर HTML CSS? नहीं सर, ओनली HTML एंड CSS. इवन जावास्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा है? नहीं, जावास्क्रिप्ट भी नहीं आता है सर. मैंने तुम्हें कोई पैसे वैसे तो नहीं दिए है ना ऐसे क्लास में बोलने के लिए? नहीं सर. So देखो, मैं कहना ये चाहता था बेसिकली, दिस गाय हैज स्टार्टेड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे. जिस दिन हमने पढ़ा था ना, वो भी 0 पे ही था. तुम्हारा CSS इसमें कंबाइन नहीं हुआ है. देखो क्या एरर आ रहा है. जस्ट अ सेकेंड. दिस वन. देखो, ये गौरव ने अपने से बनाया है, खुद से बनाया है. सर सिर्फ इसके अंदर एक्स्ट्रा सिर्फ शैडो इफेक्ट है, बाकी सब आपने जो सिखाया है उतना ही है उसके अंदर. हाँ मालूम है. बटन्स और कंटेनर्स. ये कहां से? मैंने क्लास में शैडो तो सिखाया नहीं गौरव को.
क्या किया गौरव ने? बस जा करके खुद थोड़ा सा सर्च किया। W3 स्कूल। W3 स्कूल और MDN पे है, बहुत सारी जगह पे है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्लास में, मैंने गौरव को ना ही पर्सनली ऐसा कुछ मेरे पास गौरव का नंबर भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरा व्हाट्सएप खुला नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे व्हाट्सएप खोल के भी दिखाता। मेरे पास ना गौरव का नंबर है, ना गौरव ने मुझे कभी आउट ऑफ द क्लास कांटेक्ट किया है। मतलब वन ऑफ द सर वे, अदर वे सौरव। वुड बी, सॉरी सौरभ, 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 अरे यार ठीक है, रियली सॉरी, रियली सॉरी। एप्पल क्लोन, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रद्धा, आप भी, आपका भी देखता हूं, आपका भी देखता हूं। एप्पल, या इट्स अ पेज, इट्स जस्ट अ पेज, बट थिंक कि वट एवर ही हैज लर्नड, whatever he has learned in the class, he has just went on and actually implemented those things. क्लास में जो भी इसने सीखा, तो अब आप सोचो, मैं क्यों डे वन से कह रहा हूं कि हमेशा वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करके बनेगा, करके सीखोगे। ओके ओके ओके, या सो व्हेनेवर आई से ना कि इन क्लास की you have to learn, like you develop the project, just go and make your hands dirty. Yeah, sure, Shraddha, Saurav, just stop sharing. Shraddha, you can share your speech, you can share your screen, and I'm doing this in the middle of the class so that ki other people also feel motivated. ठीक है यार, 10-15 मिनट अगर लगता है तो इट्स ओके, इट्स वर्थ। Okay, you have used that compiler, ठीक है, very good, very good, very good, Shraddha. Can you just make it in the full screen? Can you just make it in the full screen? Anyway, शायद आप यहाँ पे नहीं कर पाओ। देखो, did I maybe Shraddha, I'll give the option to unmute yourself also. You can also unmute yourself, Shraddha, now. Hello. Hi. Yes, sir. Yeah, you are audible now. Where did you get the motivation for this? Sir, actually, from starting, I was interested in front end. So I was in core front end from past 6 months actually. Okay, okay, okay. So maybe you So, have used any framework or something? not in this one. It is purely HTML and CSS based. Okay. So Okay. I'm not used any framework till now. Okay, okay, okay. Fine, no issues, no issues. Okay, you can stop. You can stop. Leave that part. Yes, Priyanshu, चलो शेयर कर लो, तुम्हारा भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. Yes, some of you have not filled the form yet. Only 27 people have filled. Only 27 people have filled. So kindly fill that. That is really very important. Yes, sir. Am I audible? हाँ जी, you are audible. हाँ सर, बेसिक यूआई बना है इसका, एक लॉगिन पेज का, ये दो साइड में, एक इंस्टा जैसा ट्राई किए और एक ये एफबी जैसा। कोई नहीं, you have tried that. That is also very good. ठीक है, you have tried, that is also very good. और एक साथ बनाए थे सर, आपको एक गिटहब के साथ दिखा रहे हैं। चलो कोई नहीं. Purpose of the class is achieved. Purpose of this achieved. It's okay, Pia. It's okay. You have made, that is more than enough. ठीक है, आपने बनाया, यही बहुत ज्यादा है. ठीक है. Very nice, sir. Which kind of project we should start making?
The first one you can make just your resume. The other thing that you can make a very simple web page clones. Maybe the ActiveJob का clone बनाना start कर सकते हो, or maybe you can just start making your portfolio. The first project should be your portfolio like that. ठीक है? Good, 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 very good. Very good, Shraddha. Very good. Very good, Shraddha. Acha, you all can do one thing maybe. Ki you all can just why don't you all post your all your like learnings on Twitter? If you just go here, something I would like to show. There is a hashtag called followed as 100 devs. Hashtag 100 devs. This hashtag is very popular, very, very popular. Maybe 100 devs or something. DE 100 devs. Yeah, this is the hashtag. Okay. Every time all the people are following this, people are sharing their learnings. Okay. 100 devs around or 100 days of code. Not 100 days of code, तो थोड़ा सा generic हो जाता है. But see, एक चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ. Just see my Twitter feed. Everything is all about development. मेरे पास कोई भी ऐसा other tweet feed आता ही नहीं है. Everything in my Twitter feed is all about development, web development, and all those things. Tech related, basically, you can say. Tech. Yeah, my Twitter handle is this Vikas Tweets. You can see somewhere, maybe somewhere. कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, कहाँ दिखेगा? ये रहा. Here is my Twitter handle. You all can just, in fact, follow, or in case you would like to, and may just post your learnings, whatever you are, and you can tag me as well if you would feel comfortable for that. But मेरे को tag करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? But फर्क इससे पड़ता है कि आप पब्लिक में पोस्ट करो. If you are a developer, you are not using Twitter, you are missing out. मैं Facebook, Instagram यूज ही नहीं करता. I don't use Facebook, Instagram much. Like यूज करता हूँ, बहुत कम करता हूँ. But Twitter is really the place where a developer should be. This is the good social media platform. All the opportunities, all the things that I got, a lot of these things. मेरे को बस Twitter से बहुत सारे opportunities मिलते हैं. People contact directly. Actually, basically, Twitter is more of a development profile, development centric. See, development centric profile place. Chalo. Just post your learning publicly, not only till this class, even after your classes also. Even if like up to, देखो ऐसा होता है कि जब आप ना 10 लोगों को करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि मैं भी कर लूंगा, और ये बहुत अच्छी चीज होती है. That I have followed something that in my life. ठीक है, let's go and see one another property. V. What's the error? ठीक है. Control Z, Control Z. H2. Yeah. Okay, let's move on to the next topic. Yeah, sure. अगले ही topic पे move कर रहे हैं. Here now we will study about text transformation. Text. ठीक है, text transformation.
तो बेसिकली देखो, लेट्स सी दिस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ दिस विल बी. You can just go here and say text transform, okay, and you can just make it capitalize. What will happen is not capitalize, I would use uppercase, okay. So it will change the entire heading or the entire thing in the this uppercase. You can maybe consider it doing in the lowercase. So this will make the entire thing in the lowercase. You can make, there is another is capitalized. So the first letter of the each word will be capitalized. Okay. This is one, two, एक दो तरीके ये हैं. Then we have some other properties also. Yeah. Then we have text spacing. इसी में करते हैं. Then we have text spacing. T-E-X-T, text, S-P. S-P-A. Not text, letter. This is basically letter spacing. And maybe if I would give 5 pixels. देख लो, letters के बीच में there is mode gap. In case, so maybe कि हम इसमें करते हैं paragraph tag में, P tag में, if we will just do this LE letter spacing, then it will, and maybe we would give 2 pixels. So there is some that particular difference between that particular spacing is being applied to the entire all that area of text. Good. Then we can also actually, you know, we can also give a negative value. Then things will collapse. Okay. Then there is another that is line. Someone is asking line height. Maybe you can just give 2 pixel that also. 2 pixel would be very small, then I guess 5 pixels. 5 pixels भी ज़्यादा छोटा हो गया. 10 pixels. 10 pixels भी छोटा हो गया. 20 pixels. फर्क नहीं समझ में आया. 30 pixels. Yeah. So you can just give. और मे बी इससे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो 0.5 सेंटीमीटर. ऐसा 0.5 सेंटीमीटर कर लिया, या फिर यू कैन जस्ट गिव 1 सेंटीमीटर. देखो 1 सेंटीमीटर के लाइन में के बीच में गैप्स आ रही हैं. गॉट इट? लाइन हाइट्स. Then there is word spacings, text align letter spacings. Then there is WORD word spacings, and you can just give 5 pixels. तो थोड़े से वर्ड्स के बीच में आके एक और चीज है, एक और मस्त होता है WORD word wrap. नो रैप. वर्ड रैप में नो रैप ही होता है आई गेस. नो रैप. वर्ड स्पेस नॉट वर्ड रैप. वर्ड स्पेस. वाइट स्पेस, नॉट वर्ड स्पेस. वाइट स्पेस, एंड देन जस्ट गिव नो WRAP, नो रैप. ये क्या करेगा? सी हियर, this will not wrap the text. देखो, it will just go inside. अभी ये scroll नहीं कर पा रहे, but the text will not be wrapped. It will just go from one end to another end. Usually the text are wrapped. Okay. Cool. Any doubt till this point? We are almost done. There is one or एक दो properties और बची हुई हैं.
वो पढ़ लेते हैं, then we will be done for the day. Okay. Then we have one more link. Then we have to study about the links. So just we can use our anchor tag href, and maybe I would use google.com. Google. अब जगना सीख गए हैं। कोई बात नहीं प्रियांशु, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज द अनदर टैग, द अनदर थिंग, गूगल, ये रहा, ठीक है। इसको भी मैं एक div के अंदर कर देता हूँ, div, I'll do that in the div. And I would give that div a ID 3, ID D3, okay, and just put some styling here, div, sorry yaar, hashtag D3, and WID width would be maybe 100 pixels, height would be 100 pixels, padding would be 10%, ठीक है। ये रहा, बीच में मेरे को लाना था basically. Now let's come. We will learn all the ways to style a links. All about styling a link. All we about STYLING styling the links. Good. See here. ध्यान से देखो. You can just select a link by using the anchor tag. ठीक है? You can select the link by using an anchor tag. There are 4 states. ठीक है? Of a link. Like there are like basically 4 states. The first one is a link that is basically a normal unvisited type of link, then a visited, then you just go and hover over that link, okay, just like I'm going here and hovering over that link, and the other part is an active, whether that link is active or not. So basically for that you just go here and put, okay, this line like this one, and then you can just maybe say link, okay. This is basically when the link is normal, okay, how it will be. Then you can just go here and say HOVE or hover, when you will hover the link. Then you can just go and say A and anchor, and then visited, okay. And then when you can say active, AAC active, okay. These are the 4 ways. These are the 4, actually the 4 states of a link. एक link में 4 ही states होती हैं. So here you can just go and say कि when the link is normal, maybe you would like to give it a color, maybe क्या देते chocolate देते हैं, ठीक है. Here it is chocolate. Now when you hover it, so you give a color of pink. So now what will happen when I will hovering over it, can you see the color is being changing? So maybe I would add a different color, red. Now that would make sense. देख रहे हो? जैसे ही मैं जा रहा हूं, the link is changing. When the link is visited, once the link is visited, its color should change. So then I can maybe say color would become black. Okay. So suppose I now visited this link. This is not a proper link. So now you can see
भाई ये visited तो हो जाना चाहिए था. Underline while using active. Yeah, you can use that sort of underline text styling none. ठीक है. टेक्स्ट अलाइन में क्या मैंने यूज किया था? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ऐसा कुछ शायद होता है. ठीक है. देन या you can also use a text decoration type, something like maybe say suppose text decoration here dotted, that not dotted, underline, then text decoration maybe UNDE underline. ठीक है. Here in case you don't want to put this, so you can just put it none. ठीक है. Maybe I have answered your question, Saurav. This is how you remove the like the underline part. ठीक है. You just put text decoration 1 none. Okay. Maybe ki for some other part, like for difference. Now one thing, see how you can made it a button, like a button. ठीक है. तो just give a background color, just to give a background color of maybe aqua. ठीक है. Now it is looking like a button, and just give little bit padding auto, कुछ तो नहीं चाहेगा, तो maybe give padding 10%. ठीक है. Now you can make it a hover. When you will hover it will text decoration shadow कैसे create करते हैं? Let me देखो, मैं खुद ही भूल गया. I have forgot how to text shadow text SHA shadow CSS MDN text shadow. अच्छा, सिर्फ इसी तरह लिख ही देते हैं सीधे. text shadow of 10 pixels. कर रहा हूँ. That's what I'm doing, Priyanshu. So इसका शैडो इफेक्ट आ नहीं रहा है. एक बार शैडो की प्रॉपर्टीज देखते हैं. अरे वो बिकॉज हमने ना सही से गूगल का लिंक दिया नहीं है. गूगल का लिंक सही से मैंने दिया नहीं है. ठीक है. मेरे को मैं शैडो की प्रॉपर्टी एक बार देखनी होगी. बट या वी कैन जस्ट यूज शैडो. शैडो का कलर दे सकते हैं वाइट, 10 पिक्सल वाइट. पिक्सल इसका बैकग्राउंड कलर हटाता हूं अगर, तो शायद दिखे. इट इज नॉट वर्किंग मे बी. लेकिन अभी 2 पिक्सल 10 पिक्सल ऐसे नहीं यार. मतलब वो अगर हम एक देते हैं ना प्रियांशु, ये 2 बार शैडो की वैल्यू लिखनी होगी. नहीं यार, ऐसा नहीं होता है सच. बहुत ज्यादा जरूर कम हार्ड एंड फास्ट नहीं है. बट अगर आप कह रहे हो तो देख लेते हैं. 10 पिक्सल वो टेक्स्ट का शैडो हो रहा है. टेक्स्ट का शैडो आ रहा है. गोइंग टू टेक्स्ट नॉट टू द बॉक्स. एक बार एनिमेशन वाला चीज मेरे को देख लूंगा. कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. Yeah, so all this, then we can just also, is there anything that left?
या अच्छा, कलर के बारे में मैंने बात कर ही दिया। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। प्रियांशु, थोड़ा सा ये एनिमेशन का पार्ट हो, एनिमेशन का तो नहीं ही कहूंगा। सो बॉक्स शैडो एंड ऑल दोस थिंग्स सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो या टुडेस क्लास टिल दिस पॉइंट ओनली। आज की क्लास यहीं तक रही। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, let me know if you have any doubt, and still some people have not filled the form, so kindly fill it. ठीक है, the class is over. You can if any one of you feel to leave, you can just leave, no issues. And if anyone have any doubt, he or she can ask. Yeah, Saurabh, you can ask question if you have any. Sir, it is not related to this topic, sir. हाँ, Sir, yesterday you told about GitHub. बताओ। So it is compulsory to give license to that every project. नहीं, अभी आप जिस स्टेज पे कर रहे हो इस पे नहीं है। Okay, sir. Bye, good night. I'm still open to the questions if anyone have any. हाँ, कोड्स में गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, कोड्स में कर दूंगा, अभी ही कर दूंगा। गुड नाइट आयुषी। डिस्कॉर्ड पे भी कर दूंगा। हेलो। हाय। हेलो भैया, ये मुझे पूछना था कि दो प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स साइजिंग एंड बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स, इनका क्या यूज होता है? बॉक्स साइज यार, जो बॉक्स क्रिएट करते हैं उसकी तो नाम से ही तो पता है कि बॉक्स की कर रही है। एक बार मैं देख के ही बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज सच याद तो है नहीं। एक्चुअली मैंने पहले यूज किया था बट मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर इसको कैसे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं इट्स क्या। ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट भाई, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। क्या प्रॉपर्टी पूछा था तूने? बॉक्स साइजिंग का ना? हाँ, बॉक्स साइजिंग। यार बॉक्स साइज में ना आपको इसका जो भी बॉक्स होता है उसके अंदर उसकी हाइट, वेट, पैडिंग, बॉक्स मॉडल सब आपको पता है ना। तो बॉक्स मॉडल समझाया था, उसकी हाइट, विथ, पैडिंग और ये सारी चीजें आप दे सकते हो। अच्छा। कंटेंट बॉक्स और देखो उसमें ना कंटेंट बॉक्स होता है और बॉर्डर बॉक्स होता है। तो बेसिकली आप कई बार कंटेंट के लिए डिफाइन कर रहे होते हो, कई बार बॉर्डर के लिए डिफाइन कर रहे होते हो। अच्छा भैया, एक चीज़ और है कि मान लो अपने कोई प्रोजेक्ट है और हमको गिटहब पे डालना सही रहेगा या जैसे ऑनलाइन जो फ्री होते हैं होस्टिंग होती है उन पे डालना आई थिंक सही रहेगा? यार मतलब कोड तो गिटहब पे डाल दो, ठीक है। क्योंकि गिटहब मुझे ज़्यादा फास्ट लग रहा है आई थिंक उन सबसे। मतलब देखो ऐसा होता है ना कि आपको ना एक अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना होता है, एक लॉन्ग हम्म। टर्म, ठीक है, कि आदमी आप पे क्यों विश्वास करे, आपको कौन, ऐसे ये सोचो आप कौन क्यों विश्वास करे कि हाँ ये बंदा क्या है। तो जब आदमी को हम्म दिखता है ना कि यार 6 महीने से बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। हम्म फॉर नाउ जैसे कि अगर मेरे को आज इफ आई वुड हैव बीन द जज और सौरभ किसी भी एक्स वाई रीजन से क्लास के हम्म अंदर फाइनल टेस्ट में फेल कर जाता है, ठीक है, yeah, सपोज दैट, तो आई वुड पास हिम। द रीजन बिकॉज कि आई हैव सीन हिम और आई एम सीइंग हिम डूइंग हिज ऑल हिज वर्क और स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द टाइम। तो उसे ट्राई किया उसका अच्छे से। स्ट्रेट हो जाता है। तो जब आपकी गिटहब प्रोफाइल अच्छी होती है कहीं पर, अब फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेंटली मेरे को एक टीचिंग ऑफर आया था, ठीक है।
इट्स बिकॉज मेरी पब्लिक टीचिंग प्रोफाइल अच्छी है, स्टूडेंट्स राइट गुड फीडबैक अबाउट मी टाइम टू टाइम। जब भी जॉब लगती है तो वो दे राइट गुड अबाउट मी ऑन द लिंक्डइन एंड दे टैग मी। Yeah. Sometimes they share good messages to me and I share them. That's a part of the personal branding. मैं करूंगा ही करूंगा। There is nothing about show off or something like that. तो ये सारी चीजें होती हैं, तो they just big and वो ये एक लंबे टाइम से होता है, ठीक है। तो चलो मैं तुमको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी संडे की बात है, संडे में तो क्या कल की बात है, कल या परसों की बात है आई गेस, ठीक है। अच्छा। तो आई वाज गिविंग अ इंटरव्यू एट अ कंपनी एंड टीचिंग डेमो देना था, सब कुछ लाइक था, ऐसा था। तो मेरी कोई टेक्निकल स्किल वगैरह जज ही नहीं की उन्होंने, नथिंग। आई वाज नॉट आस्क्ड एनी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड इट वाज अ स्ट्रेट अवे डेमो क्वेश्चन, वाज अ डेमो राउंड। मैंने डेमो दिया, आई स्टार्टेड टीचिंग, 10 मिनट में उन्होंने बंद कर दिया, बोला कि ठीक है चलो हो गया, कोई बात नहीं, थैंक यू, और ऑल गुड ऑल सेट। मतलब उसके बाद वो चीजें हो रही, क्योंकि मेरी बाकी सारी चीजें ना, मेरा लीड कोड प्रोफाइल या फिर मेरी टीचिंग प्रोफाइल जो पब्लिक प्रोफाइल बनी हुई है, दैट मैटर्स। तो दैट इज द एविडेंट फॉर माई सेल्फ, दैट इज स्पीकिंग फॉर मी। आई डोंट हैव टू गो अगेन कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, जब मैं आई एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, मेरा पहले टेक्निकल राउंड हुआ था, फिर बिहेवियरल राउंड हुआ था, फिर मुझे एक दो बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़े थे, एक दो बार ऐसे टेक्निकल में भी 2 राउंड हुआ था, कोडिंग राउंड हुआ था, फिर ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन करने के लिए, देन आई हैड टू गो एंड टीच टू द टीचर। फिर मेरा एक ऐसे इंटरोगेशन राउंड भी हुआ था कि मतलब टीचर जानबूझ के ऐसे तुम वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप बच्चों को कैसे झेल पाते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। नाउ हैव डेवलप्ड अ प्रोफाइल, मैं ट्विटर पे शेयर करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे अपने अच्छी चीजें शेयर करता हूँ, तो इट हेल्प मी गेटिंग अचीविंग द गुड थिंग्स। अब ये मैंने भी सुना था कहीं कि ट्विटर पे ये चीजें शेयर करना सा ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये देखो ट्विटर पे क्या कोड थोड़ा पोस्ट करोगे, कोड तो ट्विटर पे हाँ पड़ेगा, यू पोस्ट इट लिंक, ठीक है, आप गिटहब पे पोस्ट कर, गिटहब पे अपलोड करो, गिटहब पे होस्ट कर दो, गिटहब पे ये चीजें कर दो, हेरोको वगैरह है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिजिटल ओशन भी, अगर आप स्टूडेंट आईडी है आपके पास तो वो भी डिजिटल ओशन भी आपको फ्री दे देता है क्रेडिट्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसके लिंक्स ट्विटर पे पोस्ट किया करो, और उसके बाद उस पर कुछ डिस्क्राइब भी करो कि व्हाट इज दैट ऑल अबाउट। अच्छा अच्छा भैया, मैं आपको अपनी वो गिटहब प्रोफाइल की लिंक भेजता हूँ, उसमें मैंने वो ऐड किया था एक रीडमी फाइल करके जो होती है, तो उससे गिटहब फाइल थोड़ी सी अच्छी लग रही है, प्लीज चेक करेंगे? चलो शेयर कर लो, कोई नहीं, कर दिया। हेलो, हाँ हाँ बताओ। सर आई हैव वन क्वेश्चन कि हम Yes. जो HTML ऑडियो फाइल डालते हैं, हाँ राइट, सो हम जब गिट पे अप्लाई, मतलब एक कंट्रोल होता है एंड ऑटो प्ले हम लूप भी चलाते हैं, राइट। सो हम जब गिटहब पे डालते हैं या फिर हम डिप्लॉय करते हैं अपनी साइट को, तो उस वक्त वो चीज काम क्यों नहीं करती है? अरे यार वो आपके लोकल फाइल में होती है ना। बट मैंने तो गिट पे भी डालना है वो। तब कुछ एरर आ रहा होगा, नॉट ऑलवेज, लोग तो डालते ही हैं। द बेस्ट वे टू यूज वुड बी सम, उसको राइट फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर आपने फोल्डर सिलेक्ट सही नहीं किया है तो वो काम नहीं करेगा। मतलब छोटी छोटी एरर्स होती हैं, जैसे जैसे कि कई बार ना आप जैसे CSS लिख रहे हो, एक कोलन की जगह सेमीकोलन कर रहा है, और वो आप आधे घंटे तक परेशान हो। या बट जैसे कि मतलब कंट्रोल डालते हैं तो हमेशा मतलब वो चीज हमेशा ही वेबसाइट पे दिख जाती है या फिर हमेशा प्ले होती है। बट अगर लूप में डाला तो कभी प्ले होती है और कभी नहीं होती है। मतलब ऐसे काफी टाइम्स हुआ है, काफी टाइम हुआ है ये। मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब जैसे कि हम कंट्रोल डालते हैं, ऑडियो कंट्रोल करके डालते हैं, तो वो चीज कैसे डिस्प्ले होती है अपने वेबसाइट पे, राइट। और ऑटो प्ले करते हैं तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो वो कभी कंटिन्यू, मतलब कभी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है म्यूजिक और कभी कभी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब लोकल हम यार वो कई लाइव बार सर्वर पे वहाँ ब्राउजर पे रीडिंग में, हाँ बता रहा हूँ, वो ऐसा होता है कि कई बार ब्राउजर रीड नहीं करता है, या कुछ कोई और चीज हो जाता है, या फिर मान लीजिए आपने कुछ और लिखा, मतलब HTML पेज में ही आपने कुछ और लिखा जो आपके एग्जिस्टिंग चीज को ओवरराइड कर देता है, समझे। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट, इसी को डिबगिंग का पार्ट कहते हैं कि यही आप डिबग करते रहते हो कि क्या इशू आ गया क्या नहीं आ गया। तो इट विल ऑलवेज हैपन, मतलब कि कई बार आप कलरिंग दोगे, अब जैसे मैं अभी बैक बॉक्स शैडो देने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ही कुछ कुछ चीजें होती हैं जो होती रहेंगी।
it will be a part of your journey. Okay. ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. ओके, वेरी गुड नाइट.